कर दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे थोड़ा मार्केट के बारे में, आखिर मार्केट में क्या चल रहा है। और तो देखिए आज संडे है और मार्केट पूरी तरीके से संडे को सेलिब्रेट कर रहा है। आप ये मान लीजिए इतनी सुस्ती तो यार कभी नहीं महसूस हुई जितनी सुस्ती आजकल महसूस हो रही है। और यूएस में क्या चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके थोड़ी सी इस पे बात करते हैं। बाकी देखिए मार्केट में बिल्कुल कुछ नहीं है, इतनी शांति और सुस्ती है कि मार्केट की तरफ वो कहते हैं झकने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। कुछ टेलीग्राम पे आज मैं देख रहा था आप ही लोगों के सवाल जवाब जो चल रहे हैं, क्यों मैंने तो सबके लिए ओपन कर रखा है, तो उसमें देखने को मिल जाता है आखिर क्या चल रहा है। तो बहुत ज्यादा देखने को सिवाइनू के बारे में मिला, कुछ कार्डानो अड्डा के बारे में देखने को मिला, तो उन पर थोड़ा सा आपको जो है क्लेरिफिकेशन देता हूं। बोन क्या अपनी प्राइस रेंज में आया या नहीं आया, थोड़ा इस पर भी बताते हैं। तो देखिए पहले तो मैं आपको यहां पर एक चीज कहना चाहूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब अंदर से क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है, वो है इलॉन डोजिलॉन मार्स। अब हाँ, यहां आप ये मत कहना सर आप इसको रोज क्यों बता रहे हो। बता इसलिए रहा हूं भाई कि इसमें कुछ भी हो नहीं रहा, या तो ये हो कि इसमें कुछ हो रहा हो, लेकिन ट्विटर पर अभी भी ट्रेंडिंग में है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर नहीं तो आप चेक करके देख लीजिए, सिवाइनू दूसरे नंबर पर है और ये पहले नंबर पर। ये ट्रेंडिंग में कंटिन्यू आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं वो तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको जरूर अपडेट दे रहा हूं कि आखिर ऐसा इसमें क्या हो रहा है। क्या अंदर खाने कुछ वेल्स कुछ इसमें अब गेम खेल रही हैं क्या? क्योंकि नॉर्मल को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये ट्रेंडिंग में है क्यों, और कंटिन्यू ट्रेंडिंग में भी है। कहीं एक आध घंटे के लिए गायब हो जाता है, वरना टॉप पे ही नजर आता है इलॉन डोजिलॉन मार्स। तो ये ट्रेंडिंग पर काफी दिनों से चल रहा है, और अगर इसका ट्विटर हैंडल उठा के देखो तो कोई अपडेट नहीं है, प्राइस उठा के देखो तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगला है ट्रेंडिंग पे। तो ये थोड़ा सा ना अंदर से जागरूकता पैदा कर रहा है कि आखिर क्या है इसमें, ऐसा क्या हो रहा है कि ये बताओ मीम कॉइन होते हुए और ट्रेंडिंग में है, वो भी इतने दिनों से लगातार। तो कहीं ना कहीं इस वजह से मैंने आपको बताया कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं तो यही कहूंगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां कोई बाइंग करें या कुछ भी करें, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इतना आपसे कहना चाहूंगा। बोन हमारा अभी करंट में $1.5 पर चल रहा है, और मैंने आपको वही कहा कि 1 या $1.5 के बीच में कहीं भी आता है तो आप एसआईपी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लमसम अमाउंट बिल्कुल नहीं लगाना। मैं आपको बहुत क्लियर बोलता हूं, क्योंकि सिबेरियम का रोज कुछ ना कुछ चलता रहता है कि अब आया अब आया अब आया, तो इसलिए वो अपॉर्चुनिटी क्यों खोई जाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब हमारी रेंज में धीरे धीरे आ रहा है, और आप अगर आता है 1 और 1.5 के बीच में तो आप कहीं भी थोड़ा सा एसआईपी अपना कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च पूरी रखना और हिम्मत हो तो करना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और एक है कार्डानो अड्डा। कार्डानो अड्डा में मैंने आपको अपडेट दिया कि इसका स्टेबल कॉइन आ रहा है डीजेड। तो लोग एकदम से लूना समझ बैठे कि जैसे लूना में हुआ था सेम वैसा ही हो जाएगा, लेकिन नहीं साहब। देखिए ये डबल ट्रिपल कोलेटरलाइज्ड है इसका स्टेबल कॉइन, तो सारे टोकन लूना नहीं हो जाएंगे। आप यहां थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि बेशक इनका आया है वो भी एल्गोरिदमिक है स्टेबल कॉइन जैसे लूना का था, लेकिन इसका कोलेटराइज बहुत अच्छा है। तो आप यहां थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलें, ऐसा नहीं कि सब लूना हो जाएंगे, लूना की तरह सभी डूब जाएंगे। तो कार्डानो अड्डा में देखिए मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी रिसर्च है। अगर आपको लगता है तो देखिए फिर वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको जो एक थोड़ा समझा सकता हूं तो वही है कि कार्डानो अड्डा लूना नहीं है, और ना मुझे कोई ऐसी उम्मीद नजर आती कि लूना हो जाएगा। तो सिवाइनू, वाह वाह क्या बात है, कुछ रिश्तेदारियां जोड़ रहे हैं, कुछ सिवाइनू से प्यार कर रहे हैं, ये टेलीग्राम पे चल रहा है सब। तो भाई मेरे, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, क्रिप्टो करेंसी है, किसी भी टोकन से प्यार मत कीजिए, किसी से भी दिल मत लगाइए। यहां आप बिजनेस करने आए हो, अपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए, चाहे आपका सिवाइनू दे, चाहे बीटीसी दे, और चाहे आपका 22,000वें नंबर पर जो टोकन है वो दे। आपको मतलब केवल प्रॉफिट से होना चाहिए कि आपका फायदा किस में है, आप यहां दिल लगाने नहीं आए। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगता है। बाकी यूएस में क्या चल रहा है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस की आजकल बाहर आई हुई है, और हर जगह वही चीज चल रही है कि कहां पर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो यूएस में बीटीसी और ब्लॉकचेन को लेके क्या समझा जा रहा है, कैसा समझा जा रहा है, आप इस क्लिप को देख लीजिए, आपको सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि यूएस में बीटीसी और ब्लॉकचेन को क्या समझते हैं। और वहां बाकायदा ये एक मीटिंग चल रही है, उसके अंदर बोला जा रहा है। तो वो मैंने आपके लिए क्लिप इसीलिए निकाली कि आपको वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि अमेरिका भी बिटकॉइन को और ब्लॉकचेन को भूल नहीं सकता और ना ही डिनाई कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि बैन वाली स्थिति
कभी नहीं हो सकती। रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सख्त आ सकते हैं, मुश्किल आ सकते हैं, लेकिन ये कहो कि इनको डिनाई कर दिया जाए या इनको बिल्कुल साइड कर दिया जाए, वो चीज़ संभव नहीं है। तो आप इस क्लिप को देख लीजिए और मैं यहीं पर वीडियो को एंड करता हूं। आप इस क्लिप को जरूर देखिएगा। Chairman Crapo, Ranking Member Brown, members of the committee. Thank you for the opportunity to speak with you today. My name is Peter Van Valkenburg, and I'm the Director of Research at Coin Center, an independent nonprofit focused on the public policy issues affecting cryptocurrency and public blockchain networks. What is Bitcoin? Bitcoin is the world's first cryptocurrency, and it works because of the world's first public blockchain network. What does Bitcoin do? It's simple. It lets you send and receive value to and from anyone in the world using nothing more than a computer and an internet connection. Now, why is it revolutionary? Because unlike every other tool for sending money over the internet, it works without the need to trust a middleman. The lack of any corporation in between means that Bitcoin is the world's first public digital payments infrastructure. And by public, I simply mean available to all and not owned by any single entity. Now, we have public infrastructure for information, for websites, for email. It's called the internet. But the only public payments infrastructure that we have is cash, as in paper money. And it only works in face-to-face transactions. Before Bitcoin, if you wanted to pay someone remotely over the phone or the internet, then you could not use public infrastructure. You would rely on a private bank to open their books and add a ledger entry that debits you and credits the person you're paying. And if you both don't use the same bank, well, then there'll be multiple banks and multiple ledger entries in between. With Bitcoin, the ledger is the public blockchain, and anyone can add an entry to that ledger, transferring their Bitcoins to someone else. And anyone, regardless of their nationality, race, religion, gender, sex, or creditworthiness, can for absolutely no cost create a Bitcoin address in order to receive payments digitally. Bitcoin is the world's first globally accessible public money. Is it perfect? No. Neither was email when it was invented in 1972. Bitcoin's not the best money on every margin. It's not yet accepted everywhere. It's not used often to quote prices, and it's not always a stable store of value. But it is working, and the mere fact that it works without trusted intermediaries is amazing. It's a computer science breakthrough, and it will be as significant for freedom, prosperity, and human flourishing as the birth of the internet. And Bitcoin is just the beginning. If we can replace private payments infrastructure, then we can replace other private choke points to human interaction as well. Now, why should we want to build more public infrastructure? Why should we embrace blockchains over corporate intermediaries? Why should we tolerate their inefficiencies and work to make them better? Why should we want the pioneers of this technology here in the United States and not fleeing overseas? A simple reason. Because the corporate intermediaries providing today's critical but privately owned infrastructure are becoming fewer, larger, and more powerful, and their failures are increasingly grave. So roughly half of all Americans, 143 million people, had their Social Security numbers exposed to hackers because of a breach at Equifax. The SWIFT network has relayed hundreds of millions of dollars in fraudulent transactions because of hacked member banks in Bangladesh, Vietnam, Ecuador, and Russia. The FBI suspects now that the largest of these hacks was perpetrated by North Korea. Corrupt, low-level employees at an Indian bank, Punjab National, were able to fraudulently certify SWIFT messages stealing $1.8 billion. It's the largest electronic bank robbery in history. In fact, it's the largest bank robbery in history. In October 2016, an estimated 1.2 million internet-connected devices were hacked and turned into a botnet that for several hours made prominent websites unavailable across Europe and North America, including CNN and Fox News, the New York Times, and the Wall Street Journal. Increasingly, physical machines are being connected to the internet
to augment their capabilities. They're wired through servers that are owned and maintained by private and trusted intermediaries, the so-called Internet of Things. Pacemakers from St. Jude's Hospital have been hacked. Baby monitors from TrendNet have been hacked. And Jeeps from Jeep have been hacked to the point where they can be remotely commandeered and driven off the road. Now, those vulnerabilities are inescapable in systems that have single points of failure. It doesn't matter if the point of failure is a corporation or if it's a government. There shouldn't be a single point of failure. Similar choke points existed before the internet. If you wanted to deliver a message, you'd have to go through one of 3 television broadcasters or a handful of newspapers. Private corporations are essential, but no critical infrastructure should rely on 1 or 2. The internet removed single points of failure in communications infrastructure and ushered in a wave of competition among new media corporations building on top of its public rails. Blockchains can similarly disintermediate critical payments and IoT infrastructure. The technology is not yet ready to answer all of those questions today, but it is our best hope. And as with the internet in the 1990s, we need a light-touch, pro-innovation policy to ensure that these innovations flourish in America for the benefit and security of all Americans.